Hello and welcome to Nimbus Defence Academy. Myself Ritika, and today we are going to talk about what is TAT in SSB. So TAT stands for Thematic Apperception Test in SSB, and it is usually conducted on day 2 in your Army SSB and on day 1 itself in your AFSBs. So let's see what is required to crack this psych test, जिसमें most of the candidates fail to express themselves, fail to express their personality, which ultimately leads to their conference out. So TAT, first of all, let's try to understand what is TAT, when it was developed. So TAT is not a concept which is just limited to SSB, right? So what was it? Okay, so it reveals your underlying motives, concerns and personality trait. And TAT was developed in 1930s. Yes, it is not recent. It is not made for SSB specifically. ये बहुत पुरानी एक theory है which was made by 2 psychologists at Harvard University and clinically used to project the tests of psychology. The test consists of series of ambiguous picture depicting various scenes and characters which the subject is asked to interpret by creating a story about what is happening in the picture. So ambiguous pictures हैं, different pictures हैं जिससे वो आपकी कुछ personality traits को test करना चाहते हैं and उस personality trait से पहले वो चाहते हैं कि उन पिक्चर के अराउंड आप एक स्टोरी रिवॉल्व करो. ठीक है, उस पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना है, उसके अराउंड एक हमें स्टोरी बनानी है जिससे दे विल अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी, दे विल अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स, योर थॉट प्रोसेस एक्सेट्रा. So the primary goal of TAT is to uncover the unconscious thoughts, feelings and conflicts of individuals by asking subjects to narrate their stories based on the images. The test aims to bypass their defenses, reveal their deeper psychological instincts. So क्या होता है कि अगर आपसे कोई कुछ पूछना चाहे तो आप बहुत सोसाइटी नॉर्म्स और सिचुएशन एनवायरनमेंट को समझते हुए तभी आप अपने रिस्पॉन्सेज देते हो बहुत कैलकुलेटिव वे में. सो इन SSB एंड in TAT specifically, what they want to know is your deeper analysis of thoughts, deeper personality without your defense mechanism, जहाँ पे आप उनको filter out ना कर सकें. और ये कब आता है? ये तभी होगा जब एक बहुत टाइमली मैनर में वो टेस्ट हुआ है, बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए वो टेस्ट हुआ है, जैसे कि TAT में होता है इन साइक टेस्ट. सो TAT इन SSB, रिग्रेस इन बैक टू बैक टेस्ट, वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, 12 पिक्चर्स दैट इज 11 + 1, 11 पिक्चर्स बैक टू बैक एंड 1 पिक्चर दैट इज ब्लैंक स्लाइड, 30 सेकेंड्स एंड 4 मिनट. सो ये जो 11 पिक्चर्स हैं बैक टू बैक आएंगी, आपको 30 सेकेंड्स दिखेंगे, 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर्स दिखेगी एंड देन 4 मिनट आपको स्टोरी लिखनी है. अगेन 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर दिखेगी, 4 मिनट स्टोरी. ये बैक टू बैक है, देयर इज नो ब्रेक इन बिटवीन. एंड देन लेटर ऑन आफ्टर 11th पिक्चर देयर विल बी 12th ब्लैंक स्लाइड. How do we tackle that blank slide? Blank slide पे आपको ऐसा कुछ लिखना है, basically inspired from your personal life where you have emerged as a hero. So कुछ sports, कुछ NCC related, कुछ आपने organize किया हो जहाँ पे आपने लोगों को accommodate किया हो, लोगों को आपने modulate करके कैसे आपने जाकर अपना task fulfill किया. So something related to your personal life which you are proud of, where you have emerged as a leader, that is the experience which they are looking for in the blank story. 3 cardinal points again जो हम PPDT की वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, that is what led to the situation, what is happening and what will be the outcome. आपकी स्टोरी which has to be 12 lines and 100 words, उसमें ये 3 चीजें आंसर होनी चाहिए. इंट्रोडक्शन 2 lines, main body 8 lines and then 2 lines your conclusion. Then later on, the story should be logical, personalized, positive. Do not introduce a problem. So most candidates जो चीज गलत करते हैं was introducing a problem. जब तक एक्सीडेंट नहीं दिखाया है तो एक्सीडेंट हो गया एंड देन उसके बाद उस एक्सीडेंट को ठीक कर रहे हैं एंड देन दे थिंक कि मैम मेरे तो कैरेक्टर ने प्रॉब्लम सॉल्व करी है, उसने लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है. नो, दैट्स नॉट लीडरशिप क्वालिटी. लीडरशिप क्वालिटी इज विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अ प्रॉब्लम. आप इतना कंस्ट्रक्टिव एक अच्छा थीम कैसे डाल सकते हैं उसमें, राइट? सो लेट अस कंसीडर दिस पिक्चर which will probably come to your screen in SSB for 30 seconds, 30. At that time,
You cannot compromise on your observation. The accurate your observation will be, the accurate your theme and story will come out to be. ठीक है, सो 30 सेकेंड्स को 30 सेकेंड्स में अच्छे से ऑब्जर्व करना है. हम बैकग्राउंड ऑब्जर्व करेंगे, हम कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करेंगे, हम उनकी एज ऑब्जर्व करेंगे, क्या एज है. अब हम अगर एज देखें तो हमें पता लग रहा है ये स्कूल का तो नहीं है, ठीक है, जो आपका ये सिचुएशन है. देन सम प्रॉप इज देयर, ठीक है. आफ्टर एसोसिएटिंग ईच हिंट विच इज गिवन इन द स्टोरी, वी हैव टू मेक अ कंस्ट्रक्टिव स्टोरी. So again, 30 seconds के लिए observe, do not compromise on that, observe everything, the picture should be like a scan in your brain, ठीक है. So उसके बाद after observing, connect the dots and make a constructive story which has to be 12 lines, 100 words, and later on with a very constructive, positive main body and conclusion. So back to back ये test होगा, back to back they will see what kind of a personality do you have, what kind of a trait do you have, what are the pillars of your personality, what are your morals, what are your thoughts, all those things. All right, so ये back to back है, तो इस वजह से 6th 7th पिक्चर के बाद कहीं ना कहीं हम रियलिटी लिखना शुरू कर देते हैं पेपर पे, ठीक है. एंड देन इज द टाइम व्हेन योर साइकोलॉजिस्ट विल फाइंड आउट इफ ही हैज अ पर्सनालिटी वेयर ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग और if is this is his actual personality. So about this picture, in the next video we will discuss what could have been a good theme or a bad thing regarding this picture. You can also give your views, your themes in the comments down below. Thank you and Jai Hind.